Hello everyone, welcome to Unit 3 of Public International Law 2. In this unit, we study how disputes between states are settled under international law and the role played by the United Nations in maintaining international peace and security. Let us begin with the concept of peaceful settlement of dispute. International law encourages states to resolve their conflicts peacefully rather than through the use of force. The objective is to maintain international peace, security, and friendly relations among nations. The first method is negotiation. Negotiation is the simplest method of dispute settlement. In this process, the parties directly communicate with each other and attempt to resolve their differences through discussion and compromise. The second method is mediation. In mediation, a third party actively participates in the settlement process and helps the dispute state reach an agreement. The third method is conciliation. Under conciliation, a commission or neutral body examines the dispute, investigates the facts, and proposes solution to the parties. Another important method is good offices. In this process, a third party merely brings the disputing states together and encourages dialogue, but does not actively participate in the negotiations. These peaceful methods are recognized under Chapter 6 of United Nations Charter. The next important topic is judicial settlement of disputes. International disputes may also be resolved through court and tribunal. The most important judicial institution is the International Court of Justice, commonly known as the ICJ. The ICJ is the principal judicial organ of the United Nations. It settles legal disputes between states and gives advisory opinions on legal questions referred to it. While studying the ICJ, we focus on three major areas: composition, jurisdiction, and basic principles. Another frequently asked topic is the distinction between a dispute and a situation. A dispute refers to a specific disagreement between states regarding a legal or factual issue. A situation refers to circumstances that may lead to international tension or conflict but do not yet constitute a formal dispute. Students should also understand the difference between the Permanent Court of International Justice and the International Court of Justice. The Permanent Court of International Justice functioned under the League of the Nations, whereas the International Court of Justice functions under the United Nations. The next topic is sanctions under Chapter VII of the United Nations Charter. When international peace is threatened, the Security Council may
impose sanctions. These may include economic restrictions, diplomatic measures, or other actions aimed at restoring peace and security. Finally, we study collective security under the United Nations Charter. The principle of collective security means that a threat against one state is considered a common for the entire international community. Member states cooperate through the United Nations to maintain international peace and security. To summarize, Unit 3 focuses on peaceful settlement of the disputes, negotiations, mediation, conciliation, good offices, international court of justice, difference between dispute and situation, difference between permanent court of international justice and international court of justice, and collective security. If you understand these concepts clearly, you will be able to answer most examination questions from Unit 3 with confidence. Thank you for watching. Now for हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ 2 के यूनिट 3 डिस्प्यूट सेटलमेंट अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे का संपूर्ण परिचय प्राप्त करेंगे। यह यूनिट मुख्य रूप से इस बात से संबंधित है कि जब दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किस प्रकार शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। सबसे पहले हम पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अर्थात विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उद्देश्य यह है कि राज्य युद्ध या बल प्रयोग के बजाय बातचीत और कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने विवादों का समाधान करें। इसका पहला माध्यम है निगोशिएशंस अर्थात वार्ता। वार्ता सबसे सरल और सबसे अधिक प्रयुक्त तरीका है। इसमें विवादित पक्ष आपस में सीधे बातचीत करके समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। दूसरा माध्यम है मीडिएशन अर्थात मध्यस्थता। इसमें कोई तीसरा पक्ष सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करता है और दोनों पक्षों को समझौते तक पहुंचाने में सहायता करता है। तीसरा माध्यम है कंसिलिएशन अर्थात सुलह। इस प्रक्रिया में एक आयोग या समिति विवाद की जांच करती है और समाधान के लिए सुझाव प्रस्तुत करती है। इसके बाद आता है गुड ऑफिसेस। इसमें कोई तीसरा पक्ष केवल विवादित पक्षों को वार्ता की मेज तक लाने का कार्य करता है, लेकिन समाधान प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका नहीं निभाता। ये सभी उपाय संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 6 चैप्टर 6 में के अंतर्गत शांतिपूर्ण विवाद निपटान के साधन माने जाते हैं। अब हम न्यायिक निपटान अर्थात जुडिशियल सेटलमेंट की बात करते हैं। जब विवाद कानूनी स्वरूप का हो तो उसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों और अधिकरणों के माध्यम से भी सुलझाया जा सकता है। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण संस्था है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसका मुख्य कार्य राज्यों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करना तथा आवश्यक होने पर परामर्शात्मक मत देना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्ययन करते समय हमें इसकी संरचना, अधिकारिता तथा मूल सिद्धांतों को समझना चाहिए। परीक्षा में अक्सर पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण विषय है डिस्प्यूट और सिचुएशन में अंतर। डिस्प्यूट अर्थात विवाद वह स्थिति है जिसमें दो राज्यों के बीच किसी मुद्दे पर स्पष्ट असहमति हो। सिचुएशन अर्थात परिस्थिति वह अवस्था है जो भविष्य में विवाद या संघर्ष का कारण बन सकती है, लेकिन अभी औपचारिक विवाद नहीं बनी है। एक अन्य महत्वपूर्ण विषय है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अंतर।
परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस लीग ऑफ नेशन के अधीन कार्य करता था, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशंस के अधीन कार्य करता है। जब हम चैप्टर 7 के अंतर्गत सैंक्शन अर्थात प्रतिबंधों की चर्चा करते हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा होता है, तब सुरक्षा परिषद विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा सकती है। इसका उद्देश्य शांति और व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना होता है। अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है कलेक्टिव सिक्योरिटी अर्थात सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा का अर्थ है कि किसी एक राज्य पर खतरा पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता माना जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य मिलकर शांति और सुरक्षा और न्याय रखने का प्रयास करते हैं। यदि पूरे यूनिट को संक्षेप में समझें तो इसमें मुख्य रूप से निम्न विषय शामिल हैं। विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, वार्ता, मध्यस्थता, सुलह, गुड ऑफिसेस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, डिस्प्यूट और सिचुएशन में अंतर, PCIJ और ICJ में अंतर, चैप्टर 7 के अंतर्गत प्रतिबंध तथा सामूहिक सुरक्षा। यदि आप इन सभी विषयों को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो यूनिट 3 के अधिकांश प्रश्नों का उत्तर आसानी से लिखा जा सकता है। धन्यवाद।